हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल जो प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में आप बताऊंगा। तो फर्स्ट जो है इसमें इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मोर देन 200 ईयर्स, 2000 साल से ज़्यादा पहले अर्ली केमिस्ट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर ऑर्गेनिक origin and properties. Organic compounds were considered as those obtained from living organisms, plants or animals, and inorganic compounds were those obtained from non-living तो मतलब पहले जो होता था इसमें कहते थे साइंटिस्ट के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स से जो है वो हमें हासिल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन लिविंग से होते हैं। So the early chemist never succeed in synthesis organic compounds, and their failure led to believe that organic compounds could be manufactured only and within living cells, and these compounds could never be synthesized from organic materials. This theory was referred to as vital force theory. तो इसको vital force was rejected by Frederick Holler when he obtained urea NH2CO. So इसके बाद जो है इसकी modern definition of organic chemistry NH4CNO. So since the synthesis of urea from ammonium cyanate, millions of organic compounds have been prepared and catalyzed. Analyzed, all these compounds contain carbon as an essential element. Apart for carbon, most of the organic compounds also contain hydrogen. Compounds also contain hydrogen. Other elements which may also be present include oxygen, nitrogen, sulfur, etc. for historical and conventional reasons, and few of the carbon compounds such as CO, CO2, carbonates, bicarbonates, etc. are studied as inorganic compounds. It also has been recognized that the chemical forces in organic compounds are similar to those which exist in inorganic compounds. Thus, it was felt that organic chemistry should be refined. So, according to the modern definition के according, organic chemistry is the branch of chemistry. मतलब organic chemistry जो है chemistry की एक ऐसी branch है which deals with the study of compound of carbon and hydrogen and their derivatives. तो ये मतलब केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके जो डिराइवेटिव्स होते हैं और उनके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन था इसका कि पहले वाले केमिस्ट कैसे कहते थे और अभी के जो केमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, और इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो भी इधर लिखी हुई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप वीडियो जो है ना एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको जो है वो ये पसंद आ जाए। तो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।